Okay, so today in biogeography, we can discuss about the last topic, that is ecosystem. So first हम लोग पढ़ा है regarding soils, then इसके बाद पढ़ा है flora, distribution of fauna, and conservation of these floras and faunas. So all these, which includes flora and fauna, that is the living being, the soil system, that is non-living being. So ecosystem is that interaction between these living organisms or living beings and the non-living beings. With the interaction, they create a particular system where they will live, they will interact, and they will create their habitat there. So that kind of system, we can say it as ecosystem. Today, we are discussing about this system, how this system is being interacting, how it is being developed, what are the important components of this ecosystem, and what are the major types of ecosystem. So when we say about the ecosystem, its definition is like that. An ecosystem is a structural and functional unit of ecology where the living organisms interact. Living organisms interact each other along with its surrounding. So ये क्या है? यहाँ living organisms, they will interact with themselves. कुछ ना कुछ relation इसके बीच में है. And with their surroundings. The surroundings includes the non-living organisms or abiotic factors, abiotic components of the environment. Then only they can survive. It is not like that. Abhi हम लोग humans हैं, we are living in a society, we are interacting each other. But there are many other components which help us to live or interact. That comes under the scope of abiotic components. So it includes the interaction between organisms and the environment. That is the main point. This consists of not only a single organism, it consists of multiple organisms, from birds, to bacteria, to birds, to animals, to mammals, जो bigger animals है, vertebrates है, non-vertebrates है, plants है, trees है, ये सब कुछ मिलके एक system बनेगा. That system is the ecosystem. What happens in this system? The interaction between the organisms or abiotic factor and the abiotic factor. The term ecosystem was first used or coined by Arthur G. Translate in 1935. It means the exchange of materials between living and non-living within the system. यहाँ क्या होता है? ये term coined by Arthur G. Translate in 1935. यहाँ इसने बोला है, there is a system which exists where there is exchange of materials, different materials का exchange हो रहा है. किसके साथ? Living organism and non-living organisms के साथ. Living organism, when we studied about flora, fauna, इसका uses के बारे में बोल दिया, तो I said they are using different type of cycles. Hydrological cycle है, nitrogen cycle है, carbon cycle है. अभी the life is possible on the earth's surface only with the help of these cycles. Hydraulic cycle है, नहीं ये तो carbon cycle है. एक carbon cycle for the movement of carbon from one point to another or one component to another, there is a exchange. अभी atmosphere में carbon dioxide है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकालना है, ऑक्सीजन को अलग करना है. ये कौन करता है? प्लांट करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, ग्रीन लीव्स का, ग्रीन जिस ट्रीज पे और प्लांट्स पे ग्रीन लीव्स है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इसको तो अलग करेगा.
तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, कार्बन को यूज करेगा, एंड दैट इज मूव टू another animals and again back to the soil. So there is a exchange from atmosphere to plants to animals to soil back to atmosphere. ऐसा एक system है. That kind of system we can say it as ecosystem. Ecosystem में there we say about the structure and composition. इसमें क्या क्या है, that is its structure. और composition. Composition में बोलने से there is two main kind of components. One is biotic factor and another one is abiotic factor. Abiotic factor बोलने से air, water ये सब चीज आएगा. Soil ये without this it is not possible for the biotic factor to exist. तो biotic factors में क्या क्या है? Biotic factors में that includes the producers, that is usually the green plants hoga. When we studied about the use of this fauna, then we have flora, we have said about the producers. They are the primary producers. तो producers होगा, उसको तो कोई ना कोई consume करेगा. That includes herbivorous, carnivorous, omnivorous. वो चीज सब चीज इसमें होगा. Then the decomposes. So these are the another major components of biotic factor. तो biotic factor में producers है, consumers है, decomposes है. तो producers सब तरह का producers. It's plants, trees, even grass is also a producer. Then consumers, there are different type of consumers. It includes primary consumers, usually herbivores. Then secondary consumers, those who take the or eat the herbivores, that is secondary. Then the tertiary, those who eat this herbivores and the carnivores, they are the tertiary consumers. तो ये सब होगा, तो ये क्या होगा, ये खाएगा, they will live for long time, they will excrete, and after finally they will die. So जो मरता है उसको तो कुछ ना कुछ करके मिट्टी में मिलाना है. So who is doing that part first? Who is doing that part? It is done by the decomposes. So these include the ecosystem include biotic factor है, then abiotic factor है. तो abiotic factor we know that different material of the nature itself. Yeah. तो biotic factor को again divide किया है produces, consumers and decomposes. Again this consumers को again divide किया है primary consumers, secondary consumers and the tertiary consumers. So this makes the structure of the ecosystem. तो composition बोलने से mainly two composition, abiotic and biotic. Structure बोलने से biotic है एक साइड में, abiotic है दूसरे साइड में. उसके नीचे बायोटिक के नीचे आएगा प्रोड्यूसर्स आएगा, इसके नीचे आएगा कंज्यूमर्स आएगा, कंज्यूमर्स के नीचे डिकम्पोजर्स आएगा. विद इन दिस कंज्यूमर्स अगेन कंज्यूमर्स के नीचे आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट इज हेर्बिवोरस, देन द सेकेंडरी एंड द टर्शियरी कंज्यूमर्स, दैट इंक्लूड्स द कार्निवोरस एंड द ओमनिवोरस. कार्निवोरस दोस हु ईट ओनली द वो एनिमल्स को ही खाता है. ओमनिवोरस बोलने से दे विल ईट बोथ, हर्बिवोरस को भी हर्ब्स को भी खाता है, प्लांट्स को भी खाता है, एंड आल्सो इट विल ईट्स एनिमल्स. सो ऐसा एक स्ट्रक्चर है द इकोसिस्टम हैज. तो अबायोटिक में क्या क्या है, आई टोल्ड यू एयर, जो एटमॉस्फेयर है. विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. इसके अंदर बहुत कुछ कंपोनेंट्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टोन, ऐसा बहुत कुछ कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर में. विदाउट दिस इट इज नॉट. तो एयर के अंदर ये सब कुछ है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये सब चीज बनेगा हमारा एयर के अंदर. देन वाटर, विदाउट वाटर it is not possible for any living organism to exist.
तो वाटर होनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स द हाइड्रोस्फीयर. तो देन कम्स द सोइल्स एंड द रॉक्स. तो घर बनाना है, अब नहीं है तो जो भी चीज पकाना है, नहीं है तो कुछ प्लांट्स को ग्रो करना है, देन इट रिक्वायर्स ए बेसमेंट. The soil and the rocks provides this basement. Then within the rocks there are certain lot of minerals. Minerals is available in the rocks, minerals are available in the soil, minerals are available in water, minerals are available in air. So these forms the basic component of life. अभी जो कार्बन बोला है, कार्बन जरूरी है जीने के लिए, और जो भी कॉम्पोनेंट आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. तो ये सब चीज कहाँ से मिलेगा? दिस इज बीइंग गेटिंग फ्रॉम द अबायोटिक कंपाउंड. तो मिनरल्स हो गया अनदर. देन द क्लाइमेटिक फैक्टर. तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. सो हाउ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस? अभी एक इकोसिस्टम है हिमालयन माउंटेन इकोसिस्टम. तो माउंटेन इकोसिस्टम में वी नो दैट वन इज टोपोग्राफी है, लेकिन विद इन द माउंटेन इकोसिस्टम इफ यू गो अप आल्टीट्यूड ज्यादा होने से उधर कोल्ड क्लाइमेट है, तो टेम्परेचर इज लेस देयर. So there exists another kind of ecosystem. In some other place, in the tropical area, there are different type of ecosystem. अभी ज्यादा टेम्परेचर होने से arid region में, नहीं तो desert ecosystem. तो desert area में वही है, precipitation weather, पानी कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सनलाइट ज्यादा होगा, wind action ज्यादा होगा, humidity बहुत कम होगा. So that is desert ecosystem. So that is mainly the component is the climate. Climate decide karega which kind of ecosystem should be exist there. Then the topography. Topography, as I said, mountain ecosystem है. तो नहीं ये तो अभी wetland ecosystem. Wetland ecosystem we know that it is actually water है इसका important component. But for the water to exist, उधर तो कुछ बेस चाहिए, तो उसके अंदर पानी होनी चाहिए. ये दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द टोपोग्राफी. सो अभी उसी टोपोग्राफी में क्या क्या एनिमल्स को एक्सिस्ट कर सकता है, तो ये ऑल इंटरकनेक्टेड है. देन द आल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो हम बोला है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड, ये सब चीज है. दिस क्लाइमेटिक फैक्टर विल वेरी फ्रॉम डिफरेंट लैटिट्यूड. लैटिट्यूड होने से इक्वेटोरियल एरिया में एक क्लाइमेट होगा, उसके बाद ट्रॉपिकल एरिया में आने से ट्रॉपिकल में दूसरा क्लाइमेट होगा, सब ट्रॉपिकल में, सब पोलर एरिया में, पोलर रीजन में. तो इट्स वेरीज, द क्लाइमेट वेरीज, द सोइल्स वेरीज, द अमाउंट ऑफ एयर वेरीज, द अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज, the composition of the soils and mineral varies. So it varies everywhere. And the altitude, जैसे हम बोला है हाइट ज्यादा होने से टेम्परेचर कम होगा, ऐसा different variations. So these all control comes under the scope of abiotic, because it has no life. But for the existence of life, all these factors is required. Without air, life not possible. Without water, life not possible. Without minerals, without soil and rocks, life is not possible. Climate controls all these things. इसको तो मिनरल अभी मिट्टी में आने के लिए the important factor is climate है. Climate decide करेगा. The energy which is coming from the sun, the incoming solar radiation is the primary source of energy. Without that source, energy नहीं है तो there is no ecosystem. Ecosystem खाली है. तो ये इसको तो use कर रहे हैं हम लोग. So every component, every abiotic component has its own importance. So then biotic components के बारे में हम बोल दिया है. But when we study about the components of ecosystem, there is abiotic and biotic. So
बायोटिक कंपोनेंट्स में दिस इंक्लूड्स द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। लिविंग कंपोनेंट्स बोलने से अभी हमारे जो आंख में बिना नहीं देखने वाला माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल हो, जो भी हो, उतना बड़ा ऑर्गेनिज्म will come under the scope of bio components. We know that Earth has lithosphere है, atmosphere है, biosphere है, different sort of spheres है. So what makes the Earth different is the existence of biosphere. Biosphere is possible without abiotic, like water है, air है, ये सब चीज है. तो इसको अलग करने के लिए one of the important components is this biotic component. तो biotic components का अपना एक linkage है. That kind of linkage we can usually say it as the chain. कैसे ये chain बनता है? जैसे the interaction with the biotic component. So जो biotic components है, they are interacting in a particular way only. That kind of way, usually we will say it as, I say, energy transferring. Energy एक biotic component से दूसरे biotic component को transfer करके देना है. So that is how the biotic components exist. They have interaction with abiotic. I am leaving that area. Biotic components exchange each other, energy exchange करता है. How they do that? Through food chain. A food chain describes how energy and nutrients move through an ecosystem. एक ecosystem है, ecosystem के अंदर there is interaction with biotic and abiotic component, and within this biotic component they have to exchange the energy. क्योंकि they can't directly extract the energy from insolation, incoming solar radiation said they are not able to produce the energy. सब biotic components को ये possible नहीं है. So there should be an exchange. ये कैसे करेगा? पहले हो गया atmosphere में आ गया. That can be used by, or that energy can be convertible or can be converted by the plants. Plants को, the plant components को has the ability to change the energy. वो जो incoming solar radiation से जो energy आता है, the plants are the producers. They can only produce or they can only transfer the energy. The autotrophic components include all green plants which uses the sun energy and manufacture food from inorganic substance. ये किसी और चीज को नहीं हो पाएगा. जो इतना भी humans इतना भी बड़ा हो गया है, इतना intelligent है, but they are also not able to produce this much of food directly from inorganic substance. For that they have to depend on plants. अभी हम लोग food produce कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? We are doing agriculture. So agriculture, whom do we are depending on? For plants. We are depending on plants. So who these plants, we can say it as they are the producers. Then comes the consumers. So first order में first आता है producers. इसके नीचे these producers से we are taking energy. We are part of consumers. We are consuming it, the energy that is being produced by the plants. So the heterotrophic components, this is single, plants ही बनाता है. तो यहाँ क्या है? Multiple components है, multiple level का components है. This includes non-green plants. All animals which take food from autotrophs directly or indirectly.
These comes under the scope of consumers. There are parasites. तो इसको तो अपना सा फूड बनाना नहीं आता, तो ये क्या करेगा, दूसरे प्लांट को डिपेंड करेगा, अपना ग्रोथ दूसरे प्लांट में करे. They are parasites. So they take the energy which is being produced by a primary plant. So that is called non-green plants hoga. They uses this energy. Then the second one comes the animal groups. All animals which uses or eat this primary produces that is plant. The consumers also include those who indirectly take the energy. तो ये कैसे है? Being eating the herbivores or those who takes or eat the plants. The secondary one, they will take the plant. So isko to based on this we can divide the consumers into three. One is primary consumers, second one is secondary consumers, third one is tertiary consumers. So primary consumers, they are directly eating the plants. Herbivores, herbs, that is plants. Plants को consume कर. They are the first order consumers. इसमें कौन कौन आएगा? Animals that are purely depending on their food, on produces or green plants को जो depend करेगा. It includes rabbit, deer, cow, buffalo, goat, etc. They cows, buffaloes ये सब directly eat grasses, trees ये सब चीज को खाएगा. तो इसका मिल्क हम लोग खाएगा, नहीं तो इसको मार के हम लोग खाएगा. So we are not comes under the primary consumers. So after primary consumers is comes the secondary consumers. It includes carnivorous and the omnivorous, or the secondary consumers also known as the second order consumers. Carnivorous are flesh eating animals. Then the omnivorous are animals which adapted to consume herbivorous as well as the plants. वो दोनों को, herbivorous को भी खाएगा, साथ में food को भी, plants को भी खाएगा. That is omnivorous. जो those who take flesh only, we can say it as secondary consumers. इसके बीच में तो आपस में change थोड़ा ऐसा changes होता है. Secondary consumers and tertiary consumers के साथ. So main secondary consumers are considered as human beings, sparrow, crow, fox, cat, etc. Because हम humans है, हम लोग plant को भी खाएगा, meat, flesh और meat को भी खाएगा. Cat, sparrow ये सब चीज ऐसा same तरीके का. Then comes the tertiary consumers, the third order consumers. The top carnivores that prey upon other carnivores or omnivorous or the herbivores. इसको तो दूसरे किसी ने नहीं खाएगा. That is the important चीज. Secondary consumers को दूसरे उसके ऊपर का consumers खाएगा, लेकिन जो tertiary consumers है उसको तो और किसी ने नहीं खाएगा. Like lion, tiger humans को भी खाएगा, sparrow को भी खाएगा, crow को भी खाएगा, ये सब चीज को खाएगा. Tiger भी ऐसा है. Hawk, vulture, ये सब चीज ऐसे वाला है. That comes under the scope of tertiary consumers. तो ये सब हो गया हमारा food chain. Plant से जो plant energy लेगा, plant को ये सब चीज खाएगा. तो if there is no death, it was okay. ऐसे जाएगा. But one day it has to die. तो ये एनर्जी उसके अंदर होने से इसको reuse नहीं कर पाएगा. So the energy which is being taken by the animals or the consumers, primary producers and consumers, energy which is being taken from the abiotic compounds. Abiotic compounds से ये जो energy लिया है, ये producers ने and the
और द बायोटिक कंपोनेंट्स ने, इसको तो वापस देना है, then only there will be cycle, and this was done by the decomposers. They work at the bottom of the food chain. It includes the microbes that finishes the job of decomposition and produce organic constituents that can again be used by the producers. ये क्या करेगा? I said, when we said about the soil include different components. के अंदर minerals होगा, पानी होगा, बहुत कुछ चीज होगा. Along with that, the soil contains humus and nutrients. What are they? They are actually the remainings of animals or the dead remainings of these animals and plants. So ये soil में आएगा, and the decomposers do this work. They help, they will decompose the body of plant or the animal to the soil. तो soil को वापस देगा. So this is actually a cycle. ऐसा एक तो cycle है. इसमें energy flow होगा primary level to producers to consumers to decomposers, again back to the producers. So there is a cycle happens. Ecosystem is also a small area. ऐसा एक तो area है where this happens, where he taking energy, consuming energy, and redistributing energy, again concentrating energy back to the producers. ऐसा एक तो area है this ecosystem. Earth as a whole, we can't say it as an ecosystem because एक particular area में अपना सा एक climate होगा, अपना सा एक relief होगा, अपना सा एक soil होगा, ऐसा बहुत कुछ heterogeneity है the entire, but for a region it has homogeneity. वो एरिया में पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, पर्टिकुलर क्लाइमेट होगा, पर्टिकुलर सोइल होगा, ये सब चीज एक जगह पे होगा. तो ये एरिया, दिस रीजन वेयर द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड एंड रीसर्कुलेट is called the ecosystem. So the function of ecosystem includes, one is productivity. It refers to the rate of biomass production. Ecosystem का main चीज biomass, उधर energy produce करेगा, product produce करेगा, तो energy produce करने के साथ इसके साथ क्या क्या होगा? There will be growth of plants, there will be growth of animals, there will be growth of microorganisms, there will be growth of decomposers. ऐसा एक बहुत कुछ productivity होगा इस ecosystem. Second one, there will be flow of energy. क्या है flow of energy? जैसे हम पहले बोल दिया है, वो सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी आता है उसको तो डिफरेंट एरिया में रीडिस्ट्रीब्यूट करके देना है. बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये एनर्जी फ्लो करेगा. इट इज द sequential process through which energy flows from one trophic level to another, producers to consumers, primary consumers to secondary consumers to tertiary consumers. Energy captured from the sun flows from the producers to consumers and then to decompose and finally back to the environment. This is the energy flow. And what helps for this? The food chain. The food chain helps for this energy flow. Then there will be decomposition. It is the process of breakdown of dead organic material.
जो मर जाएगा उसको तो डिकम्पोज करके सोइल को वापस देगा to the nature. It is being returned back. That is decomposition. Then there is nutrient cycling. That is actually the energy flow, like the same. Then ecosystem nutrients are consumed and recycled back in various forms of utilization of. अभी energy तो energy देने वाला एक चीज है nutrient है. Nutrient भी ऐसा इसका एक cycle है. So these are some of the functions. So अभी इस picture में आप देखा होगा. This is the producer, that is grass, plants, trees. इसका तो खाएगा grasshoppers ऐसा कुछ primary consumers खाएगा. तो इसको तो grasshopper को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगा. That is bird will eat. तो bird को snake खाएगा. And again snake को all खाएगा. And after the death, these are apex predators है. तो इसको तो ये सब मरने से क्या होगा? डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज करेगा एंड ये मिट्टी में आ जाएगा एंड दिस इज बीन अगेन बीन यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. द एनर्जी फ्लो ऐसा है. नाउ वी कैन लुक द टाइप ऑफ इकोसिस्टम. सो व्हेन वी से अबाउट दिस different type of ecosystem, usually we will go for the natural type of ecosystem, but basically we can divide the ecosystem into two. One is natural ecosystem and the artificial ecosystem. जो nature ने बनाता है that is natural, and जो humans created है that is artificial ecosystem. अभी एक लेक गवर्नमेंट ने बनाता है किसी एरिया पे, तो क्या होगा? वो गवर्नमेंट ने बनाएगा, उसका तो पालन पोषण करेगा, but there will be some animals which will come to this ecosystem automatically. There will be many plants which will come to this ecosystem. ये सब हम लोग करने की जरूरी नहीं है. The nature will do it. But who is responsible for creating that particular lake? The humans. So it is artificially created area. That kind of ecosystem we can say it as artificial ecosystem. The ecosystems are manipulated and maintained by man or the human being. Cropland, agricultural land, plantation में rubber plantation किया है, तो इसके नीचे if you look you can see बहुत ज्यादा wet condition होगा वो soil के उधर, तो उधर बहुत कुछ micro organisms, snakes, different organism उसी जगह पे you can see. All these are because of the man-made plantation. तो ऐसा है. Then cropland, artificial lake, reservoirs, ये सब different type of artificial ecosystem है. But when we say about ecosystem, usually we have to follow the natural ecosystem. These ecosystems are capable of operating and maintaining themselves without any major interference by man. ये मेंटेन करने के लिए ह्यूमन की जरूरी नहीं है. अभी फॉरेस्ट के अंदर एक वेटलैंड है, एक मार्शी लैंड है. It is not necessary for the human beings to go there and interfere in this ecosystem. It will do its work. The nature will do the work for the ecosystem. The energy flow, energy transfer will be done by the nature itself. That kind of ecosystem we can say it as natural ecosystem. So this natural ecosystem can be divided into two. One is terrestrial ecosystem and the aquatic ecosystem. Terrestrial means जो land area में है, that is terrestrial, and जो पानी में है, that is aquatic. तो terrestrial ecosystem बोलने से you can say lot of terrestrial ecosystem. Forest ecosystem, grassland ecosystem, mountain ecosystem, desert ecosystem, plain area, जो भी based on the physiography, based on the climate, you can say multiple ecosystems.
Important them are forest mount ecosystem, grassland, desert, mountain, ये सब है terrestrial ecosystem. Aquatic में है, we can say पानी बोलने से there is pure water and saline water. Saline water, it is marine actually, marine area or sea oceanic water को usually it is salty है. Then we have fresh water, जो inland area में जो rivers है, जो ponds है, some of the lakes है, ये सब हो गया fresh water. Marine ecosystem, if you go, we can't limit it because within the marine area पूरा एक नया ecosystem के बारे में बोलना पड़ेगा, उतना सा ecosystem है उसके अंदर. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बोलने से वेटलैंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, स्प्रिंग इकोसिस्टम, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड्स, जो भी आपको मिलता है ये सब आएगा इस इकोसिस्टम के अंदर. लेट्स लुक इन डिटेल. So natural ecosystem mainly can be divided into terrestrial, that's exclusively land-based ecosystem है. Then aquatic ecosystem, ecosystem present in water bodies. Water bodies जरूरी है, hydrological presence इसमें जरूरी है. Terrestrial ecosystem can be again divided into forest ecosystem, consist of several plants होगा, उसके अंदर बड़ा बड़ा trees होगा, animals, microorganisms, लोग जो भी अभी tropical ecosystem, tropical evergreen, tropical semi evergreen, tropical deciduous, tundra forest, ये सब different ecosystem है. इसके अंदर different तरीके का trees होगा, plants होगा, microorganisms होगा, ये सब अलग अलग है. That comes under the forest ecosystem. Then the grassland ecosystem. अभी when we studied about, say about the grassland, we have said about savannahs, prairies, savanna, ये सब ecosystem, grassland ecosystem के बारे में बोला है. कुछ जगह पे ऐसा होगा बड़ा बड़ा grasses होगा, कुछ जगह में छोटा छोटा grasses होगा. So that way within the grasslands we can divide different type of ecosystems. यहाँ भी animals होगा, बहुत कुछ ट्रीज होगा. इसके अंदर अभी सावन्ना बोलने से दैट इज एक्चुअली ग्रासलैंड है. इसके बीच बीच में यू कैन ट्री द प्लांट्स आल्सो. मेनली द ग्रासलैंड श्रब्स होगा, हर्ब्स होगा, फ्यू ट्रीज. सावन्ना जस्ट लाइक सेड. डेंस फॉरेस्ट नहीं है, बहुत कुछ ट्री. तो यहाँ ग्रास होपर्स ऐसा कुछ बहुत कुछ क्या है birds, ये सब चीज यहाँ ज्यादा होगा. Then tundra ecosystem, devoid of trees and are found in cold climate area. इसमें क्या है, टुंड्रा टाइप का ये सब आएगा, कोल्ड एरिया में होगा. coniferous forest एरिया होगा, जो those animals which is living there has the ability to stay in cold climate. Birds उतना सा cold climate में they can survive. That is their adaptability. तो ऐसा वाला एक ecosystem. तो mountain के जो हिमालयन के ऊपर होगा, that comes under this tundra ecosystem or the cold ecosystem में होगा. Arctic region में, Antarctic region में, ये सब region में you can see such kind of ecosystem. Then the desert ecosystem. Scarce, very less पानी जगह पे है, where the air is dry almost, temperature very low, very high, or temperature variation is day to day temperature variation is very high. ऐसा एक जगह very difficult to survive. उसी जगह पे भी there are animals and plants which is adapted to that particular ecosystem. अभी हमारा बोलने से थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट,
बहुत कुछ डेजर्ट है। देन द माउंटेन इकोसिस्टम, हाई अल्टीट्यूड में, अभी टुंड्रा बोलने से ये सब माउंटेन के ऊपर जगह पे होगा, वो नीचे का जो एरिया है। अभी हमारे यहाँ का जो इकोसिस्टम दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम है। द एनिमल्स हियर आर अडॉप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट। अभी माउंटेन चढ़ने के लिए दे हैव द एबिलिटी। तो इसका अपना एक तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, दैट इज mountain ecosystem. So these are some of the ecosystem you can add lot. Then aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem can be divided into two. One is marine ecosystem, another one is freshwater. Freshwater होने से terrestrial के अंदर जो area है where you can see water. तो ये तो छोटा सा होगा, छोटा छोटा ecosystems होगा। इंक्लूड्स अभी लेक होगा, पॉन्ड्स होगा, रिवर्स होगा, स्ट्रीम्स होगा, स्प्रिंग्स होगा, वेटलैंड्स होगा, ये सब। फर्स्ट इसमें से है वन इज लेंटिक ecosystem. Freshwater ecosystem can be divided into two. One is lentic, second one is lotic. So water bodies that are moving slowly or are still, there is actually no movement or very smart movement. Lakes, ponds, ये सब उसमें पानी का फ्लो नहीं है, उसी एरिया का जो इकोसिस्टम है दैट इज लेंटिक। तो यहाँ क्या होगा, ecosystem is limited to a particular area, particular region only. जो animals उसमें है they will be available throughout the year, उसी एरिया पे available है। लेकिन लोटिक तो ऐसा नहीं है, there is fast movement of water, streams, rivers, ये सब चीज इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ इसका तो बहुत बड़ा एरिया होगा, from the mountain top to the sea mouth, river mouth, वो डेल्टाइक एरिया में तक इसका एक्सटेंशन होगा, this लोटिक का। That is a major difference. Then along with that we have the wetland ecosystem. Wetland ecosystem ऐसा है, throughout the year there will be particular amount of water in that area, water logging area होगा, that will be। उसके अंदर अभी जो amphibians है ज्यादा, वो उधर ज्यादा उस तरह देख सकते हैं। स्नेक्स, फ्रॉग्स, टॉर्टोइस, ये सब इसी एरिया पे ज्यादा है, एंड मोस्टली मार्शी है। एंड प्लांट्स विच आर अडॉप्टेड टू लिव इन हाई हाइड्रेटेड एरिया is visible in this wetland ecosystem. Then the marine ecosystem. Marine ecosystem that is in ocean. तो ये ऐसा है, we can't limit it actually. अभी coral areas में अपना coral, deep sea में deep sea ecosystems है। Within the deep sea you can see warm है, warm area होगा, mostly it is cold. In the deep sea mostly it is cold water होगा, तो cold वाटर इकोसिस्टम है उसी एरिया पे। देन शैलो वाटर में ऊपर वाला जो एरिया है उधर होगा, उधर कोल्ड वाटर भी होगा, वार्म वाटर भी होगा, सब सरफेस वाटर में होगा इकोसिस्टम। सो इट वेरीज। शैलो वाटर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में जो होता है दैट इज शैलो वाटर, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को यू कैन सी देयर। बट डीप वाटर में ऐसा नहीं है, देयर इज रेस्ट्रिक्शन, यूनिकनेस ज्यादा होगा, हेट्रोजिनिटी कम होगा डीप वाटर एरिया। तो ऐसा बहुत कुछ इकोसिस्टम्स है विद इन द मरीन एरियाज। सो दीज आर द मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स। नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल अगेन डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल हो गया, aquatic हो गया। terrestrial को you can see, you can make multiple. Important among them are forest, grassland, tundra, desert, mountain, taiga, जो भी हो that will come. Then aquatic में आएगा freshwater ecosystem and marine ecosystem. Freshwater में lentic and lotic,
Along with that, you can add wetland ecosystem, marine में deep sea, deep ocean, shallow और shallow water, deep water, warm water, cold water, ऐसा बहुत कुछ ecosystem है. Then the importance of ecosystem. First thing is it helps to regulate all the basic ecological process and manages life system and ensures sustainability. Ecological process, the relation, biotic abiotic का relation maintain करेगा, life को यहाँ exist करने के लिए support करेगा, and there will give a stability, eating and being eaten. अभी when we say about ecosystem, हम लोग बोलता है कुछ एरिया में if we social forestry करने से उधर डाइवर्सिटी नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा. तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होने से the process of food chain, process of energy flow, that will be affected. इसके लिए तो एक healthier ecological balance होनी चाहिए. For that, biodiversity is important. So ऐसा वाला चीज is being provided by this ecosystem, natural ecosystems. It participates in maintaining an equilibrium structural process between different tropical levels of energy. वो ecosystem का components को equilibrium structural अभी हम बोला है, biotic abiotic है, biotic को again divide किया है, produces, consumes, then decomposes. ऐसे structure देता है this ecosystem. It is responsible for cycling minerals throughout the biosphere. Not only minerals, this बहुत कुछ cycle, hydrological cycle है, carbon cycle है, nutrient cycle है, बहुत कुछ cycle को is being controlled by this ecosystem. It maintains and regulates nutrient cycle है, and it will create balance between abiotic and biotic ecosystem components के बीच में वो balance create करता है. Along with abiotic components, the ecosystem participate in the synthesis of organic components, primarily responsible for the transfer of energy. So, yeah, maintaining the equilibrium of the biosphere. Biosphere का ecosystem में equilibrium maintain करने के लिए ecosystem is very important. So, these are the some of the important points you should note on regarding the ecosystems. ओके, इस एरिया में कुछ डाउट है? नहीं सर. सर एक बात पूछेगा? हाँ. जो ना एरिस्टोफेनीज जो ना फादर ऑफ ज्योग्राफी है ना, एक्केशियस ना? एक्केशियस है क्या? कोई तो नेट में लेकिन दोनों दिखा रहा है. हाँ, अभी एक्केशियस है तो you have to write that. Universally accepted एक्केशियस है, but you can see Eratosthenes also. अगर ऑप्शन में आने से फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलने से वो दूसरा लग होगा ना? Yes, yes. Based on the options you can write. But father of geography, when somebody asks, you want to write, say Acacius. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, we can stop for the day now. जी sir. Okay, thank you, sir.